Good morning students. I welcome you all to the class of Applied Physics 1. Today we are going to start with the lecture 3rd of physics. Topics that we will be covering today are errors in measurement, error analysis, significant figures. First topic that we will cover today is the least count of instruments. What is least count? This is the smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count, or least count is also called as resolution. This is also called as resolution. Look at the pictures. Least count of length measuring instruments like the ruler scale. सबसे छोटी वैल्यू ये जो रूलर स्केल मेजर कर सकता है दैट इज दी 1 mm 1 millimeter. Look at the second picture of vernier caliper. Its least count is 0.1 mm. See other pictures. Screw gauge. Screw gauge का least count है 0.01 mm and for spherometer least count is 0.001 mm. Least count of mass measuring instruments like the weighing scale, least count होता है 1 kg and second picture is for the electronic balance जो कि 1 ग्राम का least count रखता है. So next see, for the watch least count is 1 second and for the stopwatch least count is 0.01 second. New topic that we will cover today is accuracy of measurement. Accuracy means के correctness, कितना correct है आपका इंस्ट्रूमेंट जो कि कोई क्वांटिटी मेजर करेगा. It refers to the closeness of a measurement to the true value of the physical quantity. See the example already mentioned. True value of mass, this is equal to 25.67 kg. Mass measured by student A is 25.61 kg. Mass measured by student B is 25.65 kg. स्टूडेंट ए ने 25.61 वैल्यू बताई है एंड स्टूडेंट बी ने 25.65 और जो ट्रू वैल्यू है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो है 25.67. तो क्लोज वैल्यू कौन सी हुई? क्लोज वैल्यू 61 हुई या 65 हुई? 67 के क्लोज कौन है? 67 के क्लोज है 65. सो द मेजरमेंट मेड बाय स्टूडेंट बी इज more accurate. Next, what do you mean by precision of instrument? It refers to the limit to which a physical quantity is measured. Example से आपको clear हो जाएगा. Time measured by student A, this is equal to 3.6 second. Time measured by student C, 3.69 second. Time measured by student C is 3.695 second. So precision क्या होता है? It tells us the limit to which a physical quantity is measured. अब student C ने हमें up to 3 place values हमें value बताई हैं. So the measurement made by student C is most precise. Next topic of this chapter is significant figures. Significant figures, I am reading out the definition. Total number of digits, bracket में mentioned है, reliable digits plus last uncertain digit which are directly obtained from a particular measurement are called significant figures.
और इन अदर वर्ड्स सिग्निफिकेंट फिगर्स वो डिजिट होती हैं, दोज आर ट्रस्टवर्दी यूनिट्स, trustworthy digits which can represent the magnitude of a physical quantity with. Next topic is significant figures. The total number of digits which are directly obtained from a particular measurement are called significant figures. Total number of digits, it contains reliable digits and the last uncertain digit. Look at the pictures. First one, the first machine is used for measuring the mass, and the mass of the bowl kept on the machine is 6.11 grams. The machine is representing, मशीन बता रही है कि जो ऊपर एक बोल रखा गया है उसका मास है 6.11 ग्राम. तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. एज पर डेफिनेशन अभी बताया है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए आप रिलायबल डिजिट प्लस उसमें लास्ट अनसर्टन डिजिट्स भी ऐड कर दोगे. तो 6 over here is the reliable digit and 1 is the uncertain digits. तो ये टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बता रहा है? 3. लुक एट दी सेकेंड पिक्चर. ये आपको स्पीड बता रहा है, दैट इज 67 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? नेक्स्ट, देयर इज ए वॉच, मेरे को टाइम बता रही है 12.76 सेकेंड. तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई मेरे पास 4. सेकेंड पिक्चर शोज द लेंथ दैट इज 1.8 सेंटीमीटर. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं 2. सी द रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. नॉन जीरो मीन्स it can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So if the number is 16, significant figures are 2. For the number 35.6, significant figures are 3. For the number 6438, significant figures are 4. Second rule is zeros between non-zero digits are significant. If the number is 205, that is 205, significant figures are 3. 3008, 3008 में significant figures हैं मेरे पास 4. 60.005 for the number 60.005 मेरे पास significant figures हैं 5. Third rule, terminal zeros in a number without decimal are not significant unless specified by a least count. For the first number 400, ये जो 2 zeros शो की गई हैं यहाँ पे, these 2 zeros, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी. तो इसीलिए 400 में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 1. नेक्स्ट नंबर 3050 में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3. क्यों 3 है? बिकॉज 0 एट द लास्ट is not counted as a significant figure. Next number 20 plus minus 1 second, इसके लिए significant figure है 2. रूल में बताया गया है unless specified by a least count. तो ये थर्ड नंबर को लीस्ट काउंट के साथ डिनोट किया गया है. तो इसीलिए जो 20 है, दिस नंबर 20, इट हैज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2. इसमें जो 0 है उसको भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे. रूल नंबर 4, टर्मिनल जीरोज दैट आर ऑल्सो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट. टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, सी द फर्स्ट नंबर 64.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होएंगी? 4. अकॉर्डिंग टू दिस रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें 4. For the number 3.60, significant figures are 3. In the number 25.060,
significant figures are 5. This is the rule number 4. Rule number 5. If the number is less than 1, all zeros before the first non-zero digit are not significant. Taking the examples here. First example is for the number 0.0064 and the number of significant figures are 2 here. For the second example 0.0850, the number of significant figures are 3. For the third example 0.0002050, number of significant figures are 4 only. Next definition is for the exact numbers. What are exact numbers? These are the defined numbers, or it can be the result of a counting. These have infinite number of significant figures because they are reliable. By definition, 1 dozen equal to 12 objects, 1 hour is equal to 60 minutes, 1 inch is equal to 2.4 centimeter. So these are the exact numbers or the exact counts. Now by counting, for example, we can say how many students are there in class? There are 45 students. There are 5 apples. There are 6 faces of cube. Now see the first rule for rounding of a measurement. If the digit is to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. See the first example 64.62. Here the preceding digit is 64 and after decimal point 62 is written here. And if rounding off it up to 3 digits, what we can write? 64.6. Second example 3.651, up to 3 digits अगर इसको round off करना हो, it comes out to be 3.65. Next number 546.3, अगर इसको round off करना हो, then it rounds off up to 3 digits and the answer is 546. Second rule for rounding of a measurement, if the digit is to be dropped is more than 5, अगर कोई भी digit जो है it is more than 5, then the preceding digit is raised by 1. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में 3.479 है, अगर इसको हमने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 7 है उसको हम 1 से रेज कर देंगे या उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3.48. इट विल बी 3.48. सी इन द सेकेंड एग्जाम्पल 93.46, यहाँ पे मेरे पास जो 6 है दिस इज़ ग्रेटर देन 5, तो होगा क्या, 4 को आप 1 से रेज कर दोगे और वी कैन से 4 इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 93.5. Now here we will see significant figures in calculations. Firstly, we will see addition and subtraction. Take the first example 13.2, 34.654, 59.53. We are adding these three numbers, result comes out to be 107.384. अब here we are doing the addition and the result of this addition will be round to the same decimal place as the least precise number. This is the least precise number.
आफ्टर डेसिमल पॉइंट इट इज़ हैविंग 1 डिजिट, इट इज़ हैविंग 3 डिजिट, इट इज़ हैविंग 2 डिजिट। तो लीस्ट प्रिसाइज इसमें नंबर कौन सा है? 13.2 है, जिसमें अप टू 1 डेसिमल प्लेस ही आपको नंबर मेंशन किया गया है। तो रिजल्ट भी आप 1 डेसिमल प्लेस के हिसाब से 107.384, it comes out to be 107.4. Similarly you can see the example of subtraction, जिसमें 19 क्या है? 19 is the least precise number, तो रिजल्ट भी अकॉर्डिंग टू द लीस्ट प्रिसाइज नंबर ही लिखा जाएगा। ऑल्दो रिजल्ट मेरे पास सब्ट्रैक्शन के बाद आया 2.833, बट according to the rule I will write it as 3. Next rule is for the multiplication and division. I am reading out. The final result would round to the same number of significant digits as the least accurate number. अब taking the example of taking the first example, we are having these 3 numbers, इनको हम multiply करेंगे और इनमें से least accurate number है this one, और इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको भी हम अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रखेंगे। लाइक अगर एक्यूरेट रिजल्ट जो है मेरे पास एग्जैक्ट आंसर 16.4379 आया था, बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हाट आई विल राइट 16 ओनली। सिमिलरली फॉर द डिवीजन ऑल्सो आई विल टेक the 3 significant figures because this is the least accurate number in this calculation, so the result is 1.51. Next topic is errors in measurement. Difference between the actual value of a quantity and the value obtained by a measurement is called the error. In simple words, error means mistake, गलती। तो एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक एरर्स, सेकेंड इज ग्रॉस एरर्स एंड थर्ड इज रैंडम एरर्स। दीज एरर्स अराइज ड्यू टू दी फ्लॉज इन एक्सपेरिमेंटल सिस्टम। द सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वर, measuring instrument and the environment. So to eliminate these errors we have to detect the source of the error. Types of systematic errors are personal errors, instrumental errors, environmental errors. First is personal errors. How do these errors arise? It comes out due to the faulty procedures adopted by the person who is making measurement. Look at the diagram shown below. A person is taking calculations from a scale and he is taking calculations from the sides, left side or right side, and it comes out to be wrong. So if a person is taking calculation just parallel above the scale, it is right. So see how these errors arise due to the mistakes done by a person only. B part is the instrumental errors which arise due to the faulty construction of the instruments. Look at the below diagram. There are 2 diagrams shown. In the first diagram we can see there is a positive 0 error. पॉजिटिव 0 एरर, हमारे पॉइंटर को 0 पॉइंट पे होना चाहिए. इट शुड बी हेयर ओनली 0 पॉइंट, बट इट इज़ नॉट हेयर, इट इज़ above the 0, so it is the positive 0 error. And here in the second diagram we are having negative 0 error, and it's because the pointer is below 0 point. So this is the instrumental error. C part is the environmental errors which are caused by the external conditions like pressure, temperature, magnetic field, wind, etc. So we should follow some steps
so that there are no environmental errors, like we can maintain the temperature and humidity of the laboratory constant by making some arrangements. Also, we should ensure that there is not any external magnetic or electric field around the instrument. Let's discuss the second type of errors. These are the gross errors. These errors are caused by mistake in using instruments, recording data and calculating results. For example, take a pressure gauge which indicates 1.01 Pascal, but a person is reading it as 1.10 Pascal. So he is noting the wrong data. So there should be a careful reading and recording of the data, which in turn can reduce the gross error to a great extent. Third part is the random errors. These errors are due to the unknown causes. Sometimes we don't know, we are not able to find out the cause. Why these error has happened? So these errors are sometimes called as chance errors also. As the causes are not known of these errors, so these errors cannot be eliminated. Next new topic. What this person has to do, he should take the mean value, the average of all the readings. He is having 5 readings. वहाँ पे average लेके we can calculate the most probable value for time period, and formula for calculating the mean value is this one. X bar is equal to 1 by n summation of xi. X bar, this is equal to all the 5 values numerator में. Number of values कितनी थी? 5. So in the denominator I am writing 5. This is equal to sum of the numerator divided by 5, and it comes out to be 3.64, which is equal to 3.6. Next, what are absolute errors? To calculate the absolute errors, see, delta xi is equal to x bar minus xi within these bars. What this mean? What these bars mean? To calculate the magnitude. X bar we have already calculate, that came out to be 3.6. अभी हमने मीन वैल्यू कैलकुलेट किया और x बार क्या है? मीन वैल्यू ही है, और ये मेरे पास 3.6 आई थी, एंड हियर इज द xi मीन्स द इंडिविजुअल वैल्यू. So here xi is 3.9, 3.5, 3.6, 3.7 and 3.5 so on. तो xi, डेल्टा xi कैसे कैलकुलेट करोगे? x बार में से xi को माइनस करके. x बार मेरे पास आया था, x बार कितना आया था? 3.6. अभी कैलकुलेट किया है मीन वैल्यू में कि 3.6 आया था, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3.6 माइनस 3.9 माइनस 0.3 आ जाएगा. तो अब नोट करिए कि मैंने यहाँ पे 0.3 लिख दिया है. आई हैव टेकन दी मैग्नीट्यूड ओनली. यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिया, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके यहाँ पे 0.3 लिख दिया है. सिमिलरली 0.1, 0, 0.1 एंड 0.1 अगेन. नाउ सी, what do you mean by mean absolute error? How to calculate the mean absolute error? This is the arithmetic mean of all the absolute errors is called the mean absolute error. अभी हमने absolute errors calculate किए हैं. जब उनका भी mean ले लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mean absolute error. अभी हमने absolute errors ये calculate किए थे, ये values आई थी मेरे पास, इसका mean ले लेना है. denominator में मैंने divide by 5 करके, it comes out to be 0.6 divided by 5, and finally 0.12, which is approximately equal to 0.1. So students, you need to do
the calculations in your copies. Next heading is reporting of result. How to write a result, how to report a result. Whenever you are going to the labs, how will you write the result? You are having instruments over there, you are having machines over there, तो वहाँ पे result आप कैसे write करोगे, including the errors also. See, the most common way adopted by scientists and engineers to report a result is, this is result is equal to best estimate plus minus error. So it represents a range of values. Therefore the period of oscillations, हमने oscillation की example start करी थी, so वहीं पे मैं उसको end कर रही हूँ. The period of oscillation is likely to be within, best estimate मेरे पास कितना आया 3.6 and error it came out to be 0.1. So हम result को कैसे लिख सकते हैं, 3.6 plus minus 0.1 second. So this gives the answer or result for the period of oscillation. Using the above calculations, above answers, we can calculate the relative error also. How to calculate the relative error? Relative error is defined as the ratio of the mean absolute error to the mean value. This is the mean absolute error and this is the mean value. What is the mean absolute error? This is 0.1 and mean value is 3.6. इन दोनों को divide करिए, it will come out to be 0.0277. So it can be approximately written as 0.028. Next, we may have to calculate percentage error also. How to calculate it? The relative error multiplied by 100 is called as percentage error. Percentage error is equal to relative error into 100. अभी अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, रिलेटिव एरर मेरे पास आया था 0.028, इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विद 100, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2.8%, एंड दिस वैल्यू इज द परसेंटेज एरर. न्यू टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. When we are doing mathematical operations like addition, subtraction, division, multiplications, so in that case we have to sum up their errors also, we have to combine their errors also according to some particular rules. So let's start. Let A, delta A, this is the absolute error in measurement of A. Let delta B be the absolute error in measurement of B, and similarly delta X क्या है, absolute error in measurement of X. For adding the two numbers when X is equal to A plus minus B, here delta X upon X, delta X is equal to न्यूमिनेटर में मेरे पास है delta A plus delta B और डिनोमिनेटर में है x की वैल्यू दैट इज a प्लस माइनस बी. तो सिंपली डेल्टा x क्या होगा, फॉर एडिंग द टू नंबर्स इट विल बी डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. नाउ व्हाट इज एस्टिमेशन? आप एस्टिमेट करते हो ना कि मेरे पास आई एम हैविंग दीज नंबर ऑफ थिंग्स, मेरे पास इतनी पेंसिल्स हैं या मेरे पास इतनी बुक्स हैं, सो यू आर जस्ट गिविंग ए रफ आइडिया. सो एस्टिमेशन इज द रफ कैलकुलेशन टू फाइंड एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज यूजफुल फॉर सम पर्पस. लुक एट दिस पिक्चर. एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन दुबई सिटी. यू आर जस्ट टू गिव ए रफ आइडिया. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल बी डूइंग ए estimation only. Last definition of this lecture is order of magnitude. Order of magnitude, this is the approximate size of something which is expressed in powers of 10. आपने किसी भी वैल्यू को powers of 10 में जब डिनोट करना है तो उसको हम बोलते हैं order of magnitude. In this example 9.1 into 10 raised to power minus 31 को आपने क्या किया, 9.1 के बदले 10 राइट कर दिया
सो फाइनली यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, 10⁻⁻30 kg. हाउ वी हैव गेट दिस 10⁻⁻30 kg? सी 9.1 को मैंने सिंपली 10 राइट कर लिया है. सो 10 इंटू 10⁻⁻30 kg, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 10⁻⁻30 kg. तो इन नोटेशन के बदले, इस नंबर के बदले आई हैव रिटन 10⁻⁻30 और इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. सो विद दिस टॉपिक students, today's lecture is over and unit is also done, that is the first unit, units and dimensions chapter is over here. So thank you students for your patience.